I have requested Head Division of Forest Products and Utilization Professor Prof. Sofi sir to deliver the lecture on medicinal and aromatic plants. ये basically invite भी क्या करना था कि this training program runs under the guidance of our professor and head professor, and now I request sir to deliver the topic. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Marjit. So good afternoon. I think it's morning still. Yeah, good morning to everyone. So I'll be, my presentation will focus on quality standards in medicinal aromatic plants. Though I think many of my PhD students might be knowing the quality standards and how we, evaluate the quality parameters in medicinal aromatic plants. So, but for the rest of the trainees, it will be a very new and fruitful one. Though many speakers might have, gone through various, detailed lectures about the entrepreneurships in forest-based sector. You see, if we go through the global scenario in medicinal aromatic plants, you can see the global herbal medicine जो है हमारा, its global market is about $120 billion US. It's a global scenario, $120 billion US. And if the growth rate, if it progresses at a rate of about 15% annually, then it may touch about 7 trillion by 2050. So this is just a figure, and from this figure we can just imagine the share, the importance and the value of MAPs in the global market. So it is just 120 billion. It is a data of about 2014, so it might have increased by this time, है ना? तो अभी 2022 है, so it might have increased more than that, but still we'll focus on this data only. Let us not see how much it has increased by today. So it was about 120. Now it's expected, if it increases with this progress, it's a growth rate of about 15%. So it can touch about 7 trillion by 2050. Then if we see 4 billion people, which represents almost 80% of the world's population, in the developing world, they rely on herbal medicines. So it means globally about 80% of the population, they rely on this herbal medicine. Then over 25% of the prescribed medicine in developed countries. Developed countries, they normally use allopathic medicine, isn't it? And developing countries, they mostly rely on this herbal medicine. So in case of developed countries, still 25% of the population, they use this herbal medicine. I'm talking about developed countries. Then it means the demand, it has increased from wild sources. I mean to say, it has increased from 8 to 15% in Europe, North America, Asia in the recent decades. So from this slide, it's clear that nationally as well as globally, the demand of this sector has increased many folds and is increasing. So it means there is a vast scope. हम तो यही conclude अब करेंगे इस slide से, है ना? So there is a vast scope जो हमारा training program है, entrepreneurial opportunities in forest-based products. So it's clear? Yes. Then let us see the global market share.
what is the global market share of this MAPs? See, the largest global market for medicinal aromatic plant, it's China. Okay? Then followed by France, Germany, Italy, Japan, Spain, UK, and US. See, among this, Europe, जो है, it's the largest herbal product market. Europe, about 7.5 billion US dollars. Germany and France are the regions market leaders with share 28%, 24%. ये market share है इनका, ठीक है? उसके बाद मैंने बहुत कुछ दिया है. पोलैंड का क्या है? Then अगर हम एशिया की बात अब करें, ठीक है, जिसमें हम भी आते हैं, Japan alone is valued 2.6 billion. Then China, it is 8 billion. Japan has the highest per capita consumption of botanical medicines. Consumption कहाँ पर ज़्यादा है? आपको पता है प्रोड्यूसर कौन है ज़्यादा? चाइना. कंज्यूम कौन कर रहा है? जापान. अब इसके बाद मैं आता हूँ इंडियन मेडिसिनल प्लांट सेक्टर. अब हम अपने कंट्री की तरफ आएंगे. So I have taken you globally, then the market share of Asia. Now let us discuss our own country. See, India trade value of herbal drug in commercial demand reached about 856 million, growing at 17.82 since last 10 years. 4,000 species, as we know. Some say 3,500, some say 4,000, some say 5,000. So the exact figure is not still known, but roughly we believe that 4,000 species are there which have medicinal properties. Yeah, almost there are 8,000 species. Usme 4,000 species, we say it has one or two or more than one medicinal properties. So this is ये कैसे इसमें हो गया? Out of these 4,000 medicinal plants, how many plants are used in Unani? How many are used in Siddha medicine? Then another is Ayurveda. Then we have the Rigpa is another. So I have listed these 4,000 and the quantity, the number which are used in different systems of medicine. So it shows, this slide shows that this Unani and this one, ये जो आप red वाला देख रहे हैं, ये पूरा, so it is Ayurveda. It is Ayurveda system of medicine. और इसमें मुझे लगता है roughly about maybe 1,800 plants are used in this Ayurveda. Then we have that one yellow. This is blue one is Western. This is the allopathic system, and almost 192 species are used here. Then some 1,200 species are used in this system of medicine. Maybe homeopathy, it might be homeopathy. Then we have Unani, then this is Rigpa. So means that out of these 400 species, maximum number of species are used in Ayurvedic, followed by then another system of medicine. So we have different systems of medicine. And about 1,170 medicinal plant species recorded in the practice of trade, 242 plant species recorded in high annual trade. अब ये जो 4,000 के 4,000 स्पीशीज़ है, सबका ट्रेड हाई नहीं है, ठीक है? मतलब है तो मेडिसिनल वैल्यू सबका, लेकिन ट्रेड सबका नहीं हो रहा है. इसमें से बहुत कम परसेंटेज है प्लांट्स की जिनका ट्रेड होता है, ठीक है? सो ट्रेड होता है खाली 242 स्पीशीज़ का. सो आउट ऑफ 4,000 नॉन मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज़ ग्लोबली, या only 242 species are under in trade sector, जिनका commercially जो trade होता है. अब वन क्यों गोस?
For example, there is one, 2, 3, medicinal plants are there. One is opium, you know it very well. Then Sinna, ये यहाँ नहीं है, it's a tropical plant. Then Xylem, you also know it. क्या बोलते हैं इसको? Isabgol. You know, India is the largest exporter, producer as well as exporter of this Isabgol. India का शेयर है. Thank you. Now question is why quality control? अब हमने देखा पूरा ग्लोबली डिमांड कितनी है, कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, ग्लोबली इसका मार्केट शेयर कितना है, किस किस कंट्री का क्या मार्केट शेयर है, हमारे कंट्री हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का इट्स ओनली 2%. इट्स ओनली 2% जो हमारा शेयर है मार्केट में, जस्ट 2% मीन्स नथिंग. 2% इज नथिंग. बाकी सबका है 20-20, 24-24, 28-28% शेयर मार्केट में. बट जो हमारी कंट्री है इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 2%. द रीजन क्वालिटी. हम क्यों नहीं, हम प्रोड्यूस भी बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन प्लांट में हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे साइलम अभी ने बताया, हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड इस साइलम के. There are some other medicinal plants as well which we produce at larger quantities and are at figure at serial number 2 or serial number 3 in as far as export is concerned. But still our contribution is 2% in the global market. The only reason is yes, that is the quality. We are not able to maintain the quality of that medicinal plant. अगर आप देखेंगे जो इनकी मंडियां है ना, जो मेडिसिनल प्लांट की मंडियां जो होती हैं, जिस तरह फ्रूट मंडियां होती हैं उस तरह मेडिसिनल प्लांट की भी मंडियां होती है. तो फॉर एग्जाम्पल अमृतसर इज़ वन ऑफ द लीडिंग मंडी ऑफ दिस मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट. और पता है क्या करते हैं वो काम? सपोज देयर डिमांड इज़ फॉर एग्जाम्पल एनुला. आई मीन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनुला. तो जो एनुला है वो यहाँ का, हम भी यहाँ प्रोड्यूस करते हैं बहुत, लेकिन वो कश्मीर का नहीं लेते हैं, वो लेते हैं चाइना का. ठीक है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा चाहिए, वो बोलते हैं कश्मीर का है, छोड़ो उधर, छोड़ो यार, उधर से मंगवाओ, चाइना से. सब कुछ चाइना से आ रहा है जो हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं ले रहे हैं वो. हाँ, लिया कुछ 1-2 क्विंटल, लेकिन बल्क जो है वो चाइना से आ रहा है. और अमृतसर की मंडी में अगर जाओगे सब कुछ मिलेगा आपको चाइना के थ्रू. चाइना का सब कुछ आ रहा है. क्यों नहीं यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं? हम भी तो हमारी भी तो डाइवर्सिटी है, हम भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू टेक आवर प्रोडक्ट बिकॉज दे नो इट. मे बी इट मे नॉट बी करेक्ट बट द क्वालिटी इज़ नॉट मेंटेन्ड. जिस तरह हम एप्पल में कर रहे हैं, है ना, एप्पल की इंडस्ट्री भी इस टाइम इज एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. एप्पल इंडस्ट्री हमारी जो हमारी लीडिंग इंडस्ट्री थी, क्यों नहीं, क्या हो गया उसको? अभी आप देखेंगे बाहर के मार्केट्स में, बाहर के इन मॉल्स में सभी एप्पल्स जो भी अफगानिस्तान से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, कहीं से 200-250 रुपया किलो, और हमारा एप्पल 50 रुपये किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये किलो बिक रहा है. So the only reason is that we are not able to maintain the quality. ठीक है, सो जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही कम हो गया, और मार्केट शेयर कम हो गया, इसमें डिमांड ही नहीं है. ठीक है, सो देयरफॉर if we have to contribute, if we have to increase our contribution in the global market or at the national market, we have to maintain the quality. दो चीज़ों में हम बड़े माहिर हैं. इंडिया इज़ बहुत ही मतलब सभी एक्सपर्ट हैं हम दो चीज़ों में. वन इज़ द एडल्ट्रेशन एंड द सेकंड वन इज़ द सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से हमारा जो ये कंट्रीब्यूशन है ना 2% रह गया. अदरवाइज हमारा पोटेंशियल है क्या, इट मस्ट बी अराउंड 15% आवर कंट्रीब्यूशन जो MAP सेक्टर में होना चाहिए, बट इट इज़ जस्ट 2% बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस.
adulteration and substitution. Adulteration, for example, I quoted one example here. It's a name of a very important medicine, तलिस्पत्रा. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, very important medicine, but it is being substituted by Texas Valenciana के leaves, then this Abies के और rhododendron के, because sometimes it's very difficult even for an expert, for a scientist it's very difficult to judge, क्योंकि आपको दो प्रोडक्ट्स होंगे और दोनों आपको सेम लगेंगे. अगर लीव्स ही होंगे उसमें, या रूट होगा उसमें, या फ्लावर होंगे उसमें, उस प्रोडक्ट में, तो पता भी नहीं चलेगा आपके पास ओरिजिनल कौन है और उसका सबस्टिट्यूट कौन है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज. तभी उस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं कि दो प्रोडक्ट्स आपको दिए जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू जज विच वन इज़ ओरिजिनल एंड विच वन इज़ सबस्टिट्यूट. जिस तरह मैंने इस ड्रग में आपको बता दिया. आई डोंट नो बट आई गॉट इट समवेयर, बट इट्स बहुत ज़्यादा बिकता है अमृतसर के मार्केट में. इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस मेडिसिन की, लेकिन इसको सबस्टिट्यूट हम करते हैं इन लीव्स से, और इंसान को पता भी नहीं चलता है कि ये सबस्टिट्यूट है कि ये ओरिजिनल है. दूसरा हमारा हो गया जी एडल्ट्रेशन. हम बड़े माहिर हैं एडल्ट्रेशन में भी. ठीक है, ऑयल अगर हम निकालते हैं, ठीक है, ऑयल अगर हम निकालते हैं तो उसमें हम दूसरा ऑयल, इन्फीरियर ऑयल मिक्स करते हैं. सिंस बोथ आर मिक्सेबल लिक्विड्स, ठीक है, दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि उसमें ओरिजिनल ऑयल का कंपोजिशन कितना है तो और जो हमने एडल्ट्रेट किया वो कितना है. और जब देखा जाता है तो उसमें एडल्ट्रेटेड ज़्यादा होता है और ओरिजिनल जो होता है वो कम ही होता है. तो दो चीज़ों में हम बड़े माहिर हैं इंडिया, हम भी उसमें आते हैं. दोनों चीज़ें, दैट इज़ एडल्ट्रेशन एंड सबस्टिट्यूशन, जिसकी वजह से जो हमारी क्वालिटी है ये डिग्रेड होती है और हमारा जो डिमांड है वो कम होती है. People don't prefer our product. Our product means Indian product. They don't prefer Indian product. So they brought such products from other countries, and China is one of the good example for that. बोर मत हो गए. So what is quality control? It means we have to maintain the quality, उसका composition, ठीक है. Then we must have how to achieve it. There should be proper harvesting schedule, proper cultivation techniques, then we must have proper storage, and then activity and stability of the active compounds. ठीक है ना. See, there are some medicinal plants where the harvesting schedule is very very important. कुछ crops ऐसे हैं कि the stage of harvest determines the stability of that active compound in that plant. अगर इस stage से ऊपर या नीचे हमने harvest किया, so the active compound will not be there, which is required, जिसका medicinal value होगा वो नहीं होगा उसमें. अगर होगा भी वो कम quantity में होगा. ठीक है. तो so stage of harvest in case of medicinal plant, it is very very important for maintaining the quality of that product. इसी तरह cultivation practices, what are, तभी तो हम कहते हैं कि there should be good cultivation practices, good management practices, isn't it? Good harvesting practices, good storage practices. ये सभी वो जो recommended practices हैं, we have to follow those practices. Then and only then we can maintain the quality of that medicinal plant. Again,
When we follow these guidelines, means good agriculture, good collection, good harvesting, good storage, when we follow all these recommended practices, it will affect on safety, efficacy and quality. ठीक है, जब हम इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, so it will definitely affect the safety. Yes, efficacy is very important. You know efficacy? See, अभी हम बोल रहे हैं कि हम we take allopathic medicines, isn't it? तो फिर क्या काम होता है कि असर नहीं हो रहा है, फ़र्क नहीं हो रहा है किसी को. Then doctor changes the medicine, किसी और कंपनी का देता है. कंपोजिशन सेम होता है बट कंपनी डिफरेंट होती है, वो उससे फ़र्क पड़ता है. Why is it that? इसका मतलब उस जो पुराना ड्रग था उसकी एफिकेसी नहीं है. ठीक है, so efficacy is very important as far as the chemical constituents are concerned. So जब ये दो चीज़ें होंगी then naturally quality भी maintain रहेगी. It's very difficult to maintain these things in medicinal plants क्योंकि सर मुझे लगता है उसके लिए काफ़ी lot of research करना पड़ेगा क्योंकि सर जो medicinal plants हैं उनमें जो chemical components हैं वो different होते हैं within the plant. हाँ. आप बोल रहे हैं कि harvesting stage वो maintain करना. I was giving an example of one harvesting. There is collection practices. There are recommended collection practices. There are recommended harvesting practices. There are recommended agro techniques. जब वो सभी हम फॉलो करेंगे तब जाके ये मेंटेन होगा. इसमें से देखो जब हम when we follow all these practices definitely ये मेंटेन हो जाएंगे. हम बोलते हैं ना यूजुअली कि हमें इस मेडिसिनल प्लांट से फर्क ही नहीं हुई. हाँ सर सिर्फ ऑल बिकॉज ऑफ हार्वेस्टिंग. मैं वही बता रहा हूँ ना. हम सर सिंपल से एग्जांपल है सर एट्रोपा. सर उसका जो राइजोम यूज होता है जैसे एट्रोपा सर वो 2 साल के बाद ही निकालना है, तब तक उससे कोई फर्क. मैं तभी बोल रहा हूँ ना. हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं मेरे से फर्क ही. सर उसका बेसिक ये है सर हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आई वाज जस्ट कोटिंग वन एग्जांपल दैट्स द हार्वेस्टिंग. लेकिन वी हैव टू फॉलो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. We have to follow good collection practices. We have to follow good harvesting practices, isn't it? है ना? Then हाँ exactly. वो तो है ना. देखो इसमें बहुत रिसर्च हुआ है और सब प्लांट्स का डेजिग्नेटेड रिकमेंडेड डोजेज हैं. पूरा सबका स्टैंडर्डाइज हो रहा है. अब हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट्स आवर फॉल्ट. ठीक है, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं या जो ग्रोवर होता है वो फॉलो नहीं कर रहा है वो प्रैक्टिसेस, वो हमारा ही फॉल्ट है. From wild. Yeah, exactly. Cultivating it. When we will start its cultivation, scientific cultivation, we will get to know the age of the plant. Exactly. We will get to know when we are harvesting. Mostly, all these collections are from wild. Mostly, but now the people in China, what they do? It's all from cultivated ones. हमारे यहाँ तो wild से आता है. But in China and other countries, they are cultivating it. ये जो इतना सारा बल्क में आता है ना, ट्रक लोड्स में आता है. So it's not from the wild. They are cultivating it and they are maintaining the quality as well. Because those people, they are following those standardized practices. हम तो उठाते हैं वाइल्ड में तो लगा दिया, हम कौन सा यहाँ फॉलो कर रहे हैं? We are not following. If we follow, efficacy, quality, safety, all things will be maintained, and it is species specific. Yes, sir. It is not that what we follow in Annulla will follow same to Podophyllum, will follow same to Picrorhiza, same practice. No, Annulla has its own, these good agricultural practices, good harvesting practices. Podophyllum has its own. So all these practices have been standardized, and they are species specific, and if we follow them, if we cultivate them away from the niche areas, ठीक है, the quality and the active ingredients are maintained. But unfortunately, we are not following those recommended practices, and that's which has degraded the quality, and that's why
the demand, the global demand, or the national demand for our product is not too much. That's why our contribution is just 2%. And it should have been more than 15%, but unfortunately it is only 2%. भाई क्यों दलील गैस? लाइट गई? लाइट तो चल रही है. ये किसके लिए चाय है? दो दो? वो प्रश्न सर के लिए थी. पियो आप? पियो अबे तो कैसे ना जाए? ना ना तरंचन. सर मुस्कान नहीं. अच्छा, some of I see some of new faces here. What's your name? Huh? Adil. You are from Manigam. Okay, good. Uwais Ahmed Bhatt. कहाँ से हो? बतलार से. अच्छा अच्छा. हाँ? वसीम. कहाँ से हो बेटा? हाँ? मनीगाम से हो. बहुत अच्छा. क्या सर ये बोल रहे हैं वो वाला नीचे वाला प्लग बोल रहे हैं नीचे वाला प्लग इन्वर्टर इसके वजह चला इगो हेडस हाल तो बाकी क्या इसलिए पूछा नीचे वाला है Baba. ये तो मैं देखना नहीं तो यहाँ से जाओ प्लांट का बिजनेस करूंगी. आपने मुझे क्या बोला था? क्या बोला था? सरकारी नौकरी. आप तो मैंने कैसा आप तो इस डिवीजन का हेड हो. क्वालिटी कंट्रोल. No, WHO has listed some of the parameters for maintaining the quality of these medicinal plants. Now, let us see. The first is the authentication. I told you earlier also that sometimes we have two plants having same morphological characters. है ना? बहुत सारे ऐसे plants you will find Yes, sir. that they have the same, morphological characters, and very difficult, to identify. है ना? So authentication is very important for that. So WHO has clearly shown that this is one of the important parameters, that is the authentication. वो तो हम उसके बाद अभी आएंगे वहाँ पर भी आपके इसमें DNA barcoding पे भी आएंगे. Then the foreign matter. How much foreign matter is present in that medicinal plant? जो हमारा जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें कितना फॉरेन मैटर है, उसके लिए भी WHO ने क्लियर गाइडलाइंस दिए कि कितना होना चाहिए. अभी मैं बता दूंगा आगे वाले स्लाइड्स में. So they have recommended in for example if this is the bacteria, for example Escherichia coli, ये कितना होना चाहिए, कब तक वायबल होना चाहिए. तो उनने वो पूरा एनालिस्ट किया है कि जो फॉरेन मैटर है किस प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए जो रिकमेंडेड है. उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वी से दिस इज इम्प्योर. तो कम होगा अगेन इट इज कम तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा होगा देन इट डिटेरियोरेट्स द क्वालिटी. Then another important thing is the organoleptic evaluation. So it means this is a property through which we can sense
the taste, it may be taste through sight, yeah, through smell. So this is the organoleptic, evaluation of these products. Then we have tissue of diagnostic importance. So it should be present in that drug. And for every medicinal and aromatic plant, there is a particular tissue. Okay? I think Asma might be knowing it very well now. There's a particular tissue which contains that constituent. So that tissue should be there. Then ash values and extractive values कितना होना चाहिए उस product में. So WHO has given a clear guidelines on that as well. Then how much volatile matter should be there. Then what should be the moisture content. Then chromatographic and spectroscopic evaluation. Then how much heavy metals are there. So this is very important evaluation that how much heavy metal contamination is there in our product. Then again the pesticide. Why this pesticide residue? सर जो हम यूज करते हैं हमें कोई डिजीज लगती है तो हम पेस्टिसाइड यूज because whatever plant material we are obtaining through cultivated ones. ठीक है? तो then in most of the medicinal plants we don't require these herbicides or pesticides. ठीक है? Even we don't require the fertilizer recommendation is not there for these medicinal aromatic plants. So there should not be the issue of pesticide issue should not be there. But when we are cultivating it on a larger scale, ठीक है? 100-200 hectare जो land है हमारा, we are cultivating these medicinal plants. So sometimes there are some chances that there are some pest attacks or some other disease might be there. So under those circumstances, the people in different parts of the country, they go for the spray of these pesticides, and that's why this has been included. If it would have if it was to be collected from the wild, then there was no reason to keep pesticide residue there. But now it's from the cultivated ones, so that's why they have kept this type of parameter. Then microbial contamination, as you know, during drying, because during processing, during extraction of the active ingredient, active chemical that constituent from these medicinal aromatic plants, so chances are there it may be infected, there may be some contamination as well. So how much should be the microbial contamination level in the product? And WHO has given the clear guidelines on that as well. कि कितना होना चाहिए, अगर बैक्टीरिया है तो कितना लिमिट तक वो होना चाहिए जिसको हम अलाउ कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं. Then aflatoxin should be completely removed, so it should not be there. Then radioactive contamination as well. Then these some of the bacteria should not be there, which may disturb or degrade the value. So I was just telling, this is the brief what I was telling you, that these are the parameters involved in the quality evaluation of herbal drugs. And I think DNA barcoding must be there, DNA fingerprinting. Yeah, it's there. Yes, As far as the quantitative analysis. Yes, sir. So this is all the evaluation, how we evaluate them. तो ये पूरा एक जिस्ट बनाया हुआ है कि कैसे हम इन पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करते हैं.
फिजिकल पैरामीटर्स को कैसे इवेलुएट करेंगे, देन हाउ वी इवेलुएट द केमिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर्स, एंड फाइनली द botanyicals. See, this is the DNA based techniques. Though I am not expert on this type of study, but now DNA barcoding, a large data has been created, isn't it? A large quantity of data it has been created, and now we can say the data bank is we have the gene bank है हमारे पास, पूरा data bank है हमारे पास, और उससे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी हो जाती है हमारे प्रोडक्ट की, हमारे प्लांट की, कि क्या ये वही है. So if my student is working on algorithm, so how we identify whether it is there's a true algorithm or not. Yes. So this is one of the important techniques, and we have the data available. So just we can go for fingerprinting and DNA barcoding, and from that we can see the authenticity of this plant. Then there are so many techniques are there. We are using different markers. ये सभी है RFLP, RAPD. These are some markers which are used for the authenticity of this product. Yes, this is the good practice guidelines. I told you, good sourcing practices, good agricultural practices. अगर तो इस पे हम फिर बात करेंगे तो गुड सोर्सिंग प्रैक्टिस के लिए मुझे आपको एक लेक्चर होना चाहिए. देन गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए देयर शुड बी सेपरेट लेक्चर ऑन दैट. देन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड क्लिनिकल ट्रायल प्रैक्टिसेस. सो एवरीथिंग शुड बी गुड, राइट फ्रॉम to cultivation till harvesting and product development, means laboratory practices. So when we follow all these practices, we will definitely maintain the quality as per the WHO guidelines. Yes. We have chemo profiling as well. है ना? बहुत सारे तो आप कर रहे होंगे कीमो प्रोफाइलिंग पे, काम कर रहे हैं. आप भी तो कर रहे हो, है ना? और कौन कर रहा है कीमो प्रोफाइलिंग पे? यहाँ पर आप भी कर रहे हो. So this is another, just like DNA barcoding, it's another important parameter. Another important study by which we can see the chemical profile of that product. Of course, toxicology, है ना? इससे भी पता चलता है कि इसमें कितना वो जो टॉक्सिन मैटर है वो कितना है इसमें. Then yes, see, we have monographs, फार्माकोपियाज. पता है ये क्या होते हैं? ये पूरा एक लिटरेचर होता है, हर एक स्पीशीज का होता है, पूरा भर के, राइट फ्रॉम कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग, सोर्सिंग, देन केमिकल प्रोफाइलिंग, ईच एंड एवरीथिंग. ये रिव्यू पेपर जैसा होता है ना? बिल्कुल, मतलब इट इज अ डिटेल्ड, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पूरा डिटेल्ड होता है. किसी का भी आप, जैसे अभी हम जापान का फार्माकोपिया के नाम से, चाइनीज फार्माकोपिया इज देयर. इंडिया का भी है, ऐसा नहीं है कि वी आर फॉर बैड, हमारा भी है उसमें. ये देयर इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर दैट. जैसे हमारे यहाँ पर DST है ना? देन वी हैव CSIR institutes are there which are working on that. Then we have preclinical evidences of safety and efficacy. Yes, this is how these came into being. The good agricultural practices, it came into being in 2003. Before that it was not there. So demand was also not there too much. But due to tremendous increase in the population, and then the side effects of this allopathic medicines, so the focus was shifted from allopathic to herbal. Even if we see in developed countries, मैंने पहले भी बताया आपको, in developed countries जो 25% of that medicines होते हैं वो herbal products के होते हैं, plant based होते हैं.
सर आप वो भी ये यूज कर रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, डेवलप्ड कंट्रीज में हर्बल चीज़ का कोई नाम जिक्र ही नहीं होता था. They were using this and they rely on those allopathic medicines. ठीक है. Sir, they have now started. Now मैं अभी बता रहा हूँ, ये 5 साल पुराना डाटा मैं बता रहा हूँ आपको. 25% of their medicines in developed countries it is plant based origin. So this time it must be more than 25%. So they have also shifted now Yes, sir. their focus. Now these are some of the criteria for good agricultural practices. क्या क्या criteria है? Site selection. ठीक है ना? So अगर हमें कहीं if we have to cultivate the medicinal plant from wild, from its niche area, outside its niche area to some other areas, so the site selection is very important. Then we should have the meteorological data of that area as well. ठीक है, because then we have to correlate. Because we have to then कुछ इस तरह हम अपनी थीसिस में कोरिलेट करते हो चीज़ों को, इस तरह इसमें भी हमें कोरिलेट करना पड़ता है. देन द ऑफ कोर्स सॉइल कंडीशंस वहाँ की कैसी है, निश एरिया में उसकी कैसी कंडीशंस है सॉइल की, हाउ वाज दैट द पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल, electric conductivity, then soil organic carbon, then we have available nitrogen, phosphorus, potassium, then we have micronutrients. So complete soil profile जो हमारे पास है, chemical conscious वो होना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं वहाँ का भी पता होना चाहिए. Then seeds and propagation materials, whether we are propagating it through seed, ठीक है, whether we are propagating it through some other ways, maybe rhizomes, maybe cuttings, so we should know it and we should have the material as well. Then the crop management, it's a big term, crop management. So इसमें सब कुछ आ जाता है, इसका आपका irrigation schedule है, then the spacing is there, ठीक है, then the shading intensity is there, then the fertilizer, if at all we are giving any dose, though it should be avoided, we must use the vermicompost and FIM. So all these things come under crop management. Then we have harvest and post-harvest. So then identification and traceability, personal equipment, सब कुछ जो इसमें good agricultural practice में होना चाहिए. If we follow, मैंने कहा आपको, this is a general term, but it is species specific. हर एक स्पीशीज का अपना गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, ठीक है, गुड सोर्सिंग प्रैक्टिस है. सो वी हैव टू फॉलो दीज गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी. देन वी हैव गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस. जब हम ये फॉलो करेंगे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, then there are some, एक तो quality भी maintain रहेगी, then there are some additional benefits as well. Reduced risk of recall or rejection. Then assured legal compliance, because there are legal issues as well, as far as medicinal and aromatic plants are concerned. And just yesterday government of Jammu and Kashmir has framed, you might have heard that in news as well, that non-timber forest products की जो policy है, it has been framed in Jammu and Kashmir yesterday. Then we have increased buyer confidence when we follow these practices, and then we provide a certification. जो आपने पढ़ा भी होगा, seed certification है. So we provide certification that this product it is a certified product, it's a quality product. ठीक है, उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर डेवलप हो जाएगा. ठीक है, जो बायर है, जो हमारे अमृतसर में इस टाइम बैठे हैं बायर्स, वो उसमें उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, दिस इज द सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, why to purchase it from the China, let us purchase it from the Indian market. जो भी इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रोवर्स हैं, हम उनसे लेंगे.
So it will increase the buyer confidence. And then assured sustainable collection. See here, जो मैं बता रहा था आपको adulterants के बारे में. How this is the drug. I have listed, for example, 6. ठीक है, this is the family. This is the material substituted. इस ड्रग को किसके साथ वो सबस्टिट्यूट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राउल्फिया. ठीक है, इसको किससे सबस्टिट्यूट कर रहे हैं? इट इज सर्पेंटिना. और इसको किससे कर रहे हैं? दूसरे स्पीशीज से कर रहे हैं. और वो स्पीशीज क्या है? इट्स इंफीरियर है. तो ये भी राउल्फिया, बट इट्स ए इंफीरियर स्पीशीज. इसमें वो पोटेंट ड्रग नहीं है. इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमें चाहिए, वो इसमें नहीं है. सो वी आर सबस्टिट्यूटिंग इट. और क्यों हम सबस्टिट्यूट कर रहे हैं? दिस इजीली अवेलेबल. जो हमारा सबस्टिट्यूट है वो इजीली अवेलेबल है, तो हम इसी को बेच रहे हैं उसके बदले. ठीक है ना. कभी कभार आप देख रहे होंगे डॉक्टर जो है, एलोपैथिक डॉक्टर, ठीक है, वो ड्रग लिखता है, और जब दुकानदार के पास जाते हैं मतलब न सुन के हाथ वो सबस्टिट्यूट करता है. वो दिखता है, ट्रेड नेम तो डिफरेंट होगा, लेकिन कंपोजिशन वो जब देखता है वो दिखता है सेम. उसमें ये भी परसेंट है, उसमें तो सेम लगता है उसको. बेग कंपनी दवा वो कंपनी ने की तो रटस बेग कंपनी वो मेडिसिन वाला क्या करता है? वो सबस्टिट्यूट देता है. वो सबस्टिट्यूट क्या होता है? वो इंफीरियर ही होता है हमेशा. बट कभी कभार डॉक्टर भी सबस्टिट्यूट प्रिस्क्राइब करता है ज़्यादातर, क्योंकि उस पैसे के लिए. एनीवे, सो my point is that so substitutes are there. We are substituting. इसीलिए जो हमारा ये इंडियन कंडीशंस में बता रहा हूँ, ठीक है, ये सभी सबस्टिट्यूट्स यहाँ पर ही हो रही हैं. इसीलिए हमारी जो डिमांड है इन मेडिसिन प्लांट्स की वो बहुत कम है. दैट्स व्हाई इट इज ओनली 2%, और इट मे बी लेस देन 2%. अब देख लीजिए, सबस्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली इंफीरियर मटेरियल, सबस्टिट्यूशन विद हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स. ये यहाँ पर हो रहा है इंडियन मार्केट में. सी ब्लैक पेपर, इसको पपाया सीड से सबस्टिट्यूट कर रहे हैं, और आपको पता नहीं चलेगा. You won't be able to detect or identify whether it is black pepper or not. Coffee powder, इसको tamarind seed powder से replace कर रहे हैं, substitute कर रहे हैं. And we are not able to see any difference. आपको तो सेम ही लगेगा. इसलिए क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सैफरॉन को, जो हमारा प्रोडक्ट है सैफरॉन, ठीक है, उसको देखो यहाँ पर नहीं हो रहा है. इसको सैफरॉन को यहाँ पर एक, क्योंकि सैफरॉन हम जब प्रोड्यूस करते हैं हम बाहर बेचते हैं. बायर तो हमारा बाहर है, ठीक है, हम तो खुद बायर तो है नहीं सैफरॉन के. बायर तो बाहर बैठा है मंडी में. तो वहाँ अपना एक वो उनका एक नेक्सस होता है. 300-400 किलो जब सैफरन आ गया या 1 क्विंटल सैफरन आ गया, तो इससे वो इसको मिक्स करते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा. किलो को 2 किलो वो बनाते हैं, इवन 3 किलो भी बनाते हैं, और सैफरन के नाम पे बिकता है वो. तभी आप देखते हैं जब काजीगुड़ में आप जाते हैं ना, यू माइट हैव सीन, दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस. जब हम पहले रोड थ्रू जाते थे ना, तो काजीगुड़ में क्या होते थे, वो सैफरान की डिबियाँ बेचते थे, छोटी छोटी 1 ग्राम की. एक दिन मुझे मिला तो कहता 50 रुपये का, सर 50 रुपये दे, 50 रुपये मुझे जाफरान 50 रुपये ये तो हद जिन्हें बिली पत वो 3 रुपये पड़ती, वहाँ रुपये पड़ती. मतलब सी दिस इज दिस, ये जो सबस्टिट्यूट है वही है, और दूर से पता नहीं चलेगा आपको कि वेदर इट इज सैफरन और समथिंग एल्स, क्योंकि जो उसमें जो वो स्टेमन्स हैं वो तो सेम है दोनों के.
And then this is, वो तो substitute तो चलो ठीक है, इतना तो हम मतलब we can tolerate it, but this one we cannot tolerate it. This is harmful substitute. ठीक है, this is harmful adulterant. अब see, ये जो हमारा है drug, अब देखो इसको harmful adulterant से हम substitute कर रहे हैं, और इसके ऐसे side effects हैं, and in many of the cases when the dose goes optimum level से ज़्यादा, so it may lead to very sometimes carcinoma, sometimes it may be lethal as well. So this तो मेरे पास बहुत ज़्यादा था, ठीक है, फिर आप परेशान नहीं होते, तो हर चीज़ में फिर आपको मिलेगा या तो inferior या तो harmful. ठीक है, so this is happening in our country. This is happening in our country. So that's why our share is very less. Our contribution to the global market is very less because they are not preferring our product. Now see, finally, if we have to increase our contribution in the global market or in the or at national market, we have to maintain the quality of the product, and for that we have to follow certain guidelines, and that guidelines are given by the WHO, the guidelines are given by National Medicine Plant Board, the guidelines are given by CSIR institutes, guidelines are given by other institutes working on cultivation, harvesting, and product development in case of medicinal aromatic plants. If we follow those guidelines, we'll surely maintain the quality of the product, and if we maintain the quality of the product, the demand will be more, and so by that our share will be in the global market will increase from 2, and it is expected we have the potential to increase it up to 15%. Yes, sir. So thank you very much. Thank you, sir.